अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव कर लिया, लेकिन अब हम बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यू पे बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? The ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants rises to the power of coefficient respectively is known as equilibrium constant as expressed in the balanced chemical equation। मतलब कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो वैल्यू होती है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द एप्रोप्रिएट पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि इस इक्वेशन में जाहिर हो रहा है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शंस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। सो ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Here the product are right as the nominator while the reactants are right as the denominator. By keeping the balanced chemical equation for the reversible reaction, we can write the equation equilibrium expression very easily. Thus, we can calculate the numerical value of Kc equilibrium constant by putting the actual concentration of reactants and products in the equilibrium expression. So, the value of Kc only depend upon the temperature. Kc has no units as a whole because it's the ratio between the products and reactants. When equal number of the mole of both sides as in a reversible reaction, chemical equation and vice versa. जब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन में बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, देन देयर इज नो यूनिट इन द केस ऑफ Kc एज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर डिफरेंट इक्वेशन। देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स। In the case of hydrogen iodide formation, we have 1 mole of hydrogen molecule and 1 mole of iodine molecule. When both molecules interact with each other, then they both produce 2 mole of the hydrogen iodide molecule. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो आ जाता है Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड स्क्वायर बाय हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल। हमने पहले भी देखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट टुवर्ड द रिएक्टेंट्स। सो जब हमने इनको यूनिट्स को लिखने की कोशिश की, मतलब कि हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव मासेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, सो हमारे पास वैल्यू पर यूनिट आ जाती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू यूनिट्स तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये फॉर द हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल एंड फॉर द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल। As the both components are equal in ratio in the number of moles, then both units cross the value of each other and at their result there is no unit in the case of formation of hydrogen iodide. In another example, there is a formation of ammonia. As we have 1 mole of nitrogen molecule and 3 mole of hydrogen molecule. When the both components interact with each other, they produce 2 mole of ammonia. According to law of mass action, we gain the equilibrium constant value Kc value is equal to 2 mole of ammonia divided by 1 mole of nitrogen to the 3 mole of hydrogen gas. As the result, according to their equilibrium expression of active mass of molar concentration, so the units of Kc is equal to 2 mole of ammonia divided by 4 mole of nitrogen and hydrogen molecules. So overall, according to cross examination, then we get this value of unit in the case of formation of ammonia.
उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.